गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू कार रिव्यूज जयपुर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए नेक्स्ट गाड़ी कौन सी करें। आज हम आ गए हैं Volkswagen की डीलरशिप टोंक रोड जयपुर में, राइट अपोजिट टू किया सांगी मोटर्स। और आज हम शूट करने वाले हैं द न्यू Volkswagen Tiguan R-Line। लेट्स गो। So this is the Volkswagen Tiguan R-Line. Sassy, classy, yet powerful. The proper European SUV. आज का वीडियो हम लोग थोड़ा डिफरेंट शूट करने वाले हैं। आज हम वन बाय वन विल टॉक वन बाय वन अबाउट द एक्सटीरियर, इंटीरियर, इन कार एंटरटेनमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, ADAS, dealer network, on-road price, drive, and the final verdict. So let's begin with the exteriors. You get a premium Volkswagen key with lock, unlock, and boot opening button. It's in gloss black finish. It looks very premium and classy. Surround ambient light with Volkswagen projection. Signature R badging on the front grille. Doors. R-Line Sport Style bumpers with insert in black gloss honeycomb design. Air intakes on the front grille with chrome trims. Body colored exterior mirrors and the door handles. Electrically adjustable ORVMs with integrated indicators. Black glossy wheel arc extensions. Chrome molding on side windows. 19-inch Coventry diamond turned surface wheels. 3D LED rear combination lamps with special signature pattern and animation. Chrome design pattern on rear bumper inserts. Black glossy rear side spoiler fins. Sound and heat insulating laminated door window glass. Sound and heat insulating laminated windscreen. Silver anodized roof rails. LED Matrix IQ lights. Sharp character lines with a proper SUV stance. You get proper hydraulics in the hood. इसमें आपको मिलता है 2 लीटर टर्बोचार्ज स्ट्रैटिफाइड इंजेक्शन इंजन जो कि 7 स्पीड ऑटोमेटिक में आता है। मैक्सिमम पावर 204 की और मैक्सिमम टॉर्क 320 न्यूटन मीटर का। फ्रंट और रियर दोनों डिस्क ब्रेक मिलती हैं। अ लेंथ ऑफ 4539 mm, अ व्हील बेस ऑफ 2680 mm. You get a boot space of 652 liters, which can be extended by folding the seats down in 40-20-40 rear splits. You get boot lamps over here, boot tray, and a spare wheel space and toolkit space over here. The boot lip is minimal, so it's easy to carry your luggage here. You get a grab handle over here. It only comes in petrol variant with a fuel tank capacity of 60 liters. Fuel efficiency company claims around 12.6 kilometer per liter. Now let's cover the interiors. You get a massive panoramic sunroof with swipe controls. ये कैबिन को काफी स्पेसी और एयरी फील देता है, स्पेशली विद दीज एम्बिएंट लाइट्स। Heated and ventilated seats, 3-zone climate control, wireless charging, cool glove box, power driver seat with memory function, full comfort loaded है। Rear seat के comfort की बात करें तो there is ample enough leg room. The under thigh support is amazing and the headroom is very decent enough. You also get rear AC vents, AC controls over here. You get Type-C charging ports, door pockets, seat pockets. You get leather finished seats. You also get a center armrest with a tray for bottle holder, cup holder. You get rear passenger seat belts. You also get ISOFIX mount. You get some storage space in the door pockets, some storage space over here, and the seat pockets, of course, and some mobile storage space over here, the small pocket. ये seats को आप आगे पीछे कर सकते हैं। Leather wrapped heated multifunction sports steering wheel with R class
Pedal shifters, interior ambient lighting on the doors and the dashboard with 30 plus color options, illuminated decorative inserts on the doors and the dashboard, R-line theme seats with front head restraints integrated into the seats, center console with illuminated storage and compartment with two cup holders, elements on the mirror switch and power window switches, door pulls interior door handles in matte chrome, doors and side trim panel with leaded inserts, front scuff plates in aluminum illumination. Get three 12-volt outlets in center console, rear, and in luggage compartment. You get a massive 15-inch touch infotainment display. You get a Digital Cockpit Pro 10.25-inch high-resolution dash display screen with customizable menu information. You get heads-up display as well. Get immersive sound experience with 8 speakers. You get wireless charging space for 2 phones, as well as 2 USB Type-C ports. You get tilt and telescopic adjustable steering wheel. You get the gear shifter over here and wiper controls over here. On the steering wheel, you get the R-line badging, the cruise control commands and ADAS features over here, and the media controls over this side. This 15-inch touchscreen also has swipe controls for the AC. You just need to swipe and change the temperature. For the volume also, it's all gesture and swipe controls. You get a seat massager function for the front seats. You can choose between the driver and the front passenger, the intensity and the duration, and you can choose the program from over here, duration and the intensity for the driver and the front passenger, both available. You can select the drive modes from here. You got Eco, Comfort, Sport, Individual, Off-Road and Snow. You get the ADAS features over here. You also get the autonomous park assist, in which the car can park automatically. Rear AC vents with temperature settings. Push start stop button over here in the center console. Electronic parking brake, and to choose from these cursor. You can choose between volume, modes. You get start stop system with battery regeneration, rain sensors, auto dimming rear view mirror, exterior mirrors power folding, auto dimming on driver side, surrounding light and reverse activated passenger's door mirror, mechanical rear seat release, variable luggage compartment flow, longitudinally sliding thigh support, split folding rear seat backrest 40-20-40, rear bench seat split folding, longitudinally movable and folding with load through hatch and center armrest. Adaptive chassis control, driver profile selection, progressive steering, driving experience with control switch including vehicle interior experience, 3-zone air care climatronic system with rear air conditioning control panel with allergen filter and enhanced air filter, rear AC vents with temperature setting, keyless start with safe lock, front seat with massage feature, front sport comfort seats heated, front pneumatic adjustable lumbar support, front seat with manual adjustment of seat travel height and backrest angle, height and reach adjustable steering wheel, front center armrest. सेफ्टी की बात करें तो इसमें साइड एयरबैग्स इन फ्रंट एंड रियर, 4 सेंटर एयरबैग, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेक बूस्टर, extended pedestrian protection measures, ISOFIX anchor, integrated heat restraints, 3-point seat belts, 3 head restraints, warning signals, anti-theft alarm, disc brakes front and rear, tire pressure monitoring system. ADAS level 2 की बात करें तो adaptive cruise control, predictive speed limiter, front assist, front cross traffic alert, oncoming vehicle braking, lane change system, lane change assist, park assist plus with park distance control, automatic headlight, high beam control light assist, dynamic road sign display, multifunction front facing camera for distance control, rear view camera system, electronic parking brake, advanced driver attention drowsiness monitor, hill start assist and hill descent control. इस कार में आपको 6 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे. प्रेसिमोन रेड मेटेलिक, नाइट शेड ब्लू मेटेलिक, ऑरिक्स वाइट, ग्लैंडिला ब्लैक, कैप्रेसिनो ग्रीन, ऑयस्टर सिल्वर. जो हम शूट कर रहे थे वो था नाइट शेड ब्लू मेटेलिक. Volkswagen का डीलर नेटवर्क की बात करें तो 208 सेल्स टच पॉइंट्स, 142 सर्विस टच पॉइंट्स, 90 प्लस एक्टिव Volkswagen असिस्टेंट व्हीकल नेटवर्क, 12 मोबाइल सर्विस यूनिट नेटवर्क पूरे इंडिया में अवेलेबल है. हाईवे पे जब 100 से 120 पे क्रूज करते हो, टिगवान शाइन स्मूथ, प्लांटेड और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग. मेरी तरफ से फुल थम्स अप फॉर ड्राइविंग लवर्स. ड्राइव मोड्स में मिलता है नॉर्मल, इको, स्पोर्ट, स्नो. स्टीयरिंग फीडबैक शार्प है, कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त. ये है रियल जर्मन एसयूवी फील. कैबिन इंसुलेशन सुपर्ब है, बाहर का शोर अंदर नहीं आता. ब्रेकिंग भी कॉन्फिडेंट है विद ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, ABS, EBD, ESC, फुल सेफ्टी पैकेज. ये कार स्मूथ है, रिफाइंड है, सिटी में लाइट स्टीयरिंग और हाईवे पे सॉलिड स्टेबिलिटी देता है. गियरबॉक्स लाइटिंग फास्ट शिफ्ट देता है और टर्बो पंच भी काफी अच्छा है. अगर आपको चाहिए सॉलिड बिल्ड, मैच्योर राइड और जर्मन ड्राइविंग फील, टिगवान इज द वन. इतना रिफाइंड और ब्रांडेड फील किसी और में नहीं मिलता.
सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर आपका बजट 50 से 55 लाख का है और आप देख रहे हो एक स्टाइलिश, पावरफुल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार विद अ क्लासी फील एंड सैसी वाइब्स, लुक नो फर्दर, टिगोन R-Line इज द चॉइस। ये इस कार की ऑन रोड प्राइस इन जयपुर। पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी कार की देखना चाहेंगे। अंटिल देन, दिस वाज रवि साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, ड्राइव सेफ।